Hi everyone. Let's wait for 5 minutes. So guys, कल का hands on सब लोग कर पाए ना अच्छे से? Was there any problem? I think I connected with Sairam, Shraddha, Vaishnavi ने भी शायद respond किया था. थोड़ा let's wait for a couple of minutes more. We should have around 8 to 9 participants approximately. We'll wait for 2 minutes, otherwise we'll go ahead. But थोड़ा confidence आ रहा है कि नहीं आ रहा है JavaScript में? Okay, so we can proceed everyone. Let me share my screen. So JavaScript पर ही बात करना है. DOM manipulation. What we are doing right now is called as DOM manipulation. DOM का मतलब क्या होता है? Document Object Model. What it basically means is the entire web page, entire HTML page which you have. Okay, so I want to show you like something very interesting about form fields. काफी interesting है. You will really like it. How do you add classes, remove classes, and create like a new kind of a form? So for example, I want to make like a login form or something like this. Let us go to Bootstrap also. So how do you do validation from JavaScript is what we are going to take a look at. Not complete validation, but so I'm just copying this whole code. Oh, sorry. Should be in the body. Okay. Also, guys, I have not added the JavaScript
these links and all. So just let me quickly add it. I don't need JavaScript right now. So we will do this. Basically, we can do this with the help of styling or without styling. So guys, let us do one thing. Right now, let us run it just as it is. Forget about everything else. Okay, forget about this. We will not use any CSS. I want to show it to you in a very basic way. Okay. All right. I will run this just in a minute. Let us say H1. Let us say login. No CSS at all. Okay. We will not use any CSS. Just a normal looking form. There is something called as a label. I will say email address, for example, input type email. You can see it here. Okay. So the ID, I will just say email input. Same thing goes here. Guys, everything is visible, na? Just once quickly confirm if everything is okay. Guys, hello. Is everything fine? Are you able to see my screen? Is everything okay? Please tell me hello. मुझे chat नहीं आ रहा है आप लोगों का. I'm not able to find your chats. Guys, are you seeing what I am showing you or not? Okay, thank you, Vaishnavi. Guys, everyone has to respond. Sairam. I don't know why we only have 2 people today. 3 people. Don't know why. What happened? आज कुछ special है क्या? Any festival today? Anything? Shraddha joined. Okay. So maybe not really sure what's the problem with the count, but fine. All right. So yeah, let us open this with our live server. Okay. So it will look horrible. I know that. Okay. Don't worry about it. So if you see the bootstrap code also here, right? So bootstrap code looks so good only because of CSS. So don't worry about it at all. Okay. We will at least make it come in different pages. Okay, so this is the page. Okay, email address. The second one would be password. Okay, so email input, password input. Let us change this here also. Input type will become password. Okay, and last but not the least, we should have a submit button. Okay, so just a normal button I'm going to create. I will say submit. Okay, this is our form. It looks absolutely horrible, right? Everyone agrees. Even I agree. This looks very bad. But don't worry about it because, as I said, this is not going to be our final UI, right? We will use some kind of bootstrap in order to make this look a bit better. I hope everyone is able to like understand why I'm saying again and again. Like the minute you start using bootstrap and stuff, exactly then your UI will start looking a bit better. You must have a bit of CSS. Plain, what we can say, like it looks very bad. Like plain stuff looks very, very bad. So we already have the form. Just wanted to show you here. We will just copy paste it. P class, the class is going to be display 5 or display 6 or whatever you like. Okay, immediately see how beautiful it looks. Of course, we have not added a container. Let us add that also. Okay, now it looks better. So there are a few things which we should keep in mind. Paragraph, this is fine. I will just put a margin and padding also. Okay, looks wonderful. I like it. Do you guys like this? We don't need this checkbox here. Let us get rid of it. Also, right now, guys, we don't need a form. I wanted to explain like a form, how does it work?
But for that, I need everyone who is present here to tell me whether you are following me or not. So I want responses from everyone. Everyone, I said, okay? Everyone personally has to respond in the chat. Okay. Otherwise, I will have no clue. It will feel like I am teaching myself. Thank you very much. Now, so this is my output. Now, what I want to do is I want to explain how does a form work. So a form has a variable called as action, not accept, action. Correct? Okay. And here there is some server side URL. Okay. You have to give the name of some server side script which will run. So again, that's not what we are going to do. We will not use any action. So basically, we have no use of a form. Right now, we don't need this form at all. I will keep it here. But remember, in React and in Angular, the way form is handled is completely different from JavaScript. Okay, so we are not going to uh, use this traditional form where you click on submit, then the form is loaded. After the form is loaded, then some server side thing will happen and you will get an output. ऐसा नहीं होगा एंगुलर में और रिएक्ट में. एंगुलर और रिएक्ट में फॉर्म जो होता है वो क्लाइंट साइड पे ही सबमिट किया जाता है. सर्वर साइड पे डेटा हम लोग भेजते ही नहीं है, अलग तरीके से भेजते हैं. So anyway, let us talk about how do you validate this. So for example, अगर मैं यहाँ input पे ना required दे दो, required, तो देखो if this does not have, like if this does not have something, तो यहाँ पे ऐसा एक error message आएगा. दिख रहा है सबको? Please fill in this field. So this is built-in validation. Okay, built-in validation. यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, min length is equal to 4, for example. So if you have like something which is less than 4, and if you try to submit, again it will like say something is missing. You see this error? Please include @ Okay, so we will not use this at all. Okay, why we will not use it, I will explain later. जब हम लोग एंगुलर वगैरह में जाएंगे तब हम लोग देखेंगे. डिफॉल्ट वाला जो वैलिडेशन है ना, we just don't use it. We use Angular's validation. We use React's validation, which is completely different. ठीक है? Okay, cool. तो मैंने यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया तो nothing. You will just see like a page reloading. If I pass some data. Okay, so you will see like nothing happening because we are not handling the form. The main idea here is how to use a modern kind of a form. वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. So for example, अगर आप यहाँ पे जाते हो ना, तो ये जो लिखा है ना, we will never share. So उसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ. क्लास इक्वल टू टेक्स्ट डेंजर. टेक्स्ट डेंजर से ये रेड बन जाएगा. रेड समझ रहा है क्या हुआ? रेड कैसे हुआ? रेड का मतलब क्या है? दिस इज लाइक एरर मैसेज. एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एरर मैसेज. सो यहाँ पे व्हाट आई वांट टू राइट इज ईमेल कांट बी एम्प्टी. ठीक है? सेम थिंग आई विल डू फॉर पासवर्ड आल्सो. So this ID is email help. Here I can say password help. These are just IDs. आपको जो अच्छा लगता है कर सकते हो. So here I can actually change it to email error and password error. So here I can say password cannot be empty. Okay, and email cannot be empty. This is what we have written. Typically it should have a full stop. अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना. ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि यूजर को ये बाय डिफॉल्ट नहीं दिखना चाहिए ना. यूजर शुड नॉट सी दिस बाय डिफॉल्ट. समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल रहा हूं तो ये चला जाना चाहिए. समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं? कैसे करेंगे मुझे बताओ. हाउ विल वी डू दिस? वी जस्ट नीड टू कीप अ ट्रैक कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है, इसमें जो डेटा है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए. अगर एम्प्टी हुआ तो ये डिस्प्ले करो, नहीं तो डिस्प्ले मत करो. बेसिकली समझ में आ रहा है?
आई होप यू आर एबल टू फॉलो. सो द होल आइडिया हियर इज कि ये ईमेल एड्रेस पे जो भी मैं लिखूंगा वो मुझे जब भी वो चेंज होगा ना डेटा, मुझे उसका लेंथ चेक करना है. अगर उसका लेंथ 0 निकला, ईमेल एड्रेस के वैल्यू का लेंथ अगर 0 निकला, इसका मतलब देयर इज नथिंग इनसाइड इट. नो नो, नॉट वैलिडेशन कृष्णा, अगेन नॉट वैलिडेशन. वी आर गोइंग टू हैंडल इट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट. इफ यू डू वैलिडेशन तो फिर एरर मैसेज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन HTML, नॉट ऑन अस. ठीक है. Okay, how do we do it? How do we do it is the main question. स्विच केस नहीं रे वैष्णवी, स्विच केस कैसे आएगा इसमें? इफ एल्स आएगा. ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे कंसोल में आपको दिखा रहा हूँ कुछ चीजें. ठीक है, ध्यान से देखना. तो ये जो हमारा ईमेल एड्रेस है उसका आईडी क्या है? देयर इज सम लाइक हॉरिबल आईडी, एग्जांपल इनपुट ईमेल 1. ऐसा नहीं चाहिए अपने को, खाली ईमेल रखेंगे तो भी चलेगा. अरे सॉरी, आईडी क्या था इसका? मैंने आईडी दिया था यार इसको. ओके, एनीवे डजंट मैटर. यहाँ पे कुछ तो आईडी आया है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज द आईडी? email 1. ठीक है, मैं आई विल जस्ट ऐड सम डेटा इनसाइड दिस abc@xyz.com. I will just add some data. Now document dot get element by id, उसमें आईडी दे देते हमें जो चाहिए वो, डॉट वैल्यू. आप लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो कंसोल में. तो देखो उसने क्या बताया, बताया ना abcxyz@something something.com, बताया कि नहीं? समझ में आया? So now what I can do is I can just write dot value not equal to 0. ये 0 नहीं होना चाहिए. तो ट्रू आया ना, क्योंकि वो 0 नहीं है. Getting my point? But let us say if it is actually 0, मैंने कुछ लिखा ही नहीं. अरे ऐसे कैसे? Okay, why is it true? Okay, let me check. कभी कभी ना जावास्क्रिप्ट, हाँ, so this is empty. उसका लेंथ, ओ माय गॉड, आई डिड नॉट राइट लेंथ. डॉट वैल्यू का लेंथ चाहिए ना. ओके, जावास्क्रिप्ट, कम ऑन, इट्स नॉट गिविंग मी द लेंथ, बट yeah, that is Sairam, that is what we want to do. If it is 0, then we need to write a warning that boss it is 0, which means that there is no data present here. So basically what I can do is this entire thing, if I take it as a string and then if I try to find the length, then it will work basically. So this is what we have to do. What we can do here is there is an event called as on change. Very, very important. Okay, what is the event? On change. Okay, what I will write here is email changed. Okay, what am I writing, guys? Email changed. Obviously I will have to write a JavaScript for it. So script source equal to main.js. We don't have this created, so we need to create this. Okay, in main.js, let's write a function email changed. And in the console log, what we will do is the same thing which we were doing there, document.getElement by id for email. So in the console log, what we will do is, okay, dot value. Okay, let us go back. Let us reload. Let us reload, get rid of all these things. Whatever. So if I write A, can you see this? The moment I hit tab, if I write B, if I go to tab, do you see it is giving me the right value? Are you able to follow? Can you see the console? No, Sairam, we don't need parsing. Relax. ये समझ में आया क्या? पहले तो ऑन चेंज पे हम लोग ने क्या किया? ऑन चेंज पे हम लोग ने क्या किया? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का जो भी वैल्यू है ना, उसको खाली प्रिंट कर दिया. किस पे? ऑन चेंज पे. यहां तक समझा क्या सबको? यस नो बोलो भाई कुछ.
बट इसमें एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। अगर मैं डायरेक्टली ऐसा कुछ लिख रहा हूं ना, तो देखो कंसोल में कुछ भी नहीं आ रहा है। कभी आएगा मालूम है क्या? जब आप टैब प्रेस करोगे, यानी इफ यू डू द ब्लर इवेंट, इफ यू गो अवे फ्रॉम दिस। देखो मैंने डिलीट कर दिया, खाली कुछ ऐसा लिखा, इफ आई क्लिक समवेयर एल्स ओनली देन। हाँ हाँ, प्रतीक्षा इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे समझेगा ऑन चेंज कहाँ लिखना है, ऑन क्लिक कहाँ लिखना है? तो मैं सिंपल बताता हूँ। ऑन क्लिक खाली बटन पे लिखा जाता है। बटन को छोड़ के कुछ भी रहेगा, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, एनीथिंग, फाइल, बटन को छोड़ के जो भी फील्ड रहेगा उसके लिए ऑन चेंज ही यूज करना है। इज दिस क्लियर प्रतीक्षा? नाउ आई विल शो यू समथिंग बेटर देन ऑन चेंज। ओके, समथिंग बेटर। अब मैं ऑन चेंज की जगह पे लिखने वाला हूं ऑन इनपुट। क्या लिखा मैंने? ऑन इनपुट। अब खुद ही समझ जाओ क्या डिफरेंस है। दिख रहा है क्या डिफरेंस कंसोल में? क्या डिफरेंस है ऑन चेंज में और ऑन इनपुट में? बताओ जरा मेरे को, मुझे बताओ जरा, व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑन चेंज एंड ऑन इनपुट? गाइस बताओ, जागो जरा जागो, आंसर देने की कोशिश करो। ऑन चेंज में क्या करना पड़ रहा था? ब्लर यानी फोकस लूज करने के बाद डेटा मिल रहा था। ऑन इनपुट का क्या फायदा है? ऑटोमेटिक रियल टाइम में मिलेगा। देखो, एज सुन एज यू चेंज द डेटा यू गेट द करेक्ट डेटा। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वेरी सिंपल। ये कंसोल डॉट लॉग को छोड़ दो। ठीक है, मैं यहां पे इसका वैल्यू ले रहा हूं। लेट अस से that we create a variable email equal to something like this, and then ये जो पूरा email मिला है, if email is not null meaning ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखना। हम वैलिडेशन को खुद हैंडल कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल ये ईमेल एड्रेस है, इसमें मैंने ए लिखा तो क्या बोला वो वैलिड? क्यों वैलिड है? क्योंकि वो एम्प्टी नहीं है। लेकिन इफ आई रिमूव दिस, अभी क्या आया? इनवैलिड आया। इज दिस क्लियर गाइज? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सिंपल इफ एल्स है, इफ एल्स। अभी क्या करना है अपने को? अगर ये वैलिड है तो वो एरर मैसेज मत दिखाओ, नहीं तो वो एरर मैसेज दिखाओ। अंडरस्टूड और नॉट? सो व्हाट वी विल डू इज, ये जो ईमेल एरर है ना, ईमेल एरर, व्हाट वी विल डू, वेरी वेरी सिंपल, ध्यान से देखना, बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, व्हाट इज द आईडी? ईमेल एरर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब नो एरर, कोई एरर मत दिखाओ बस। समझ में आया? एल्स में क्या करेंगे हम लोग? एरर में क्या लिखा है वो इधर लिख देने का। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अच्छा, दिस इज सिंगल कोट ना, इसलिए नहीं आ रहा है। इधर आई हैव टू डू दिस, एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं इसको, अदरवाइज आई हैव टू पुट अ डबल कोट। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट द मैजिक। देखो बाय डिफॉल्ट कोई एरर नहीं है, नहीं है ना?
If I type something, no error. The minute I delete everything, क्या आया? Error आया कि नहीं आया? Now, did you understand or you did not understand? If I write A, B, C, D, see, there is no error. But if I delete everything, there is an error or not? ऐसे ही होना चाहिए ना मॉडर्न वेबसाइट में? Yes or no? Is the code understood? जुगाड़. This is called as hack. जावास्क्रिप्ट हैक. क्या किया हम लोग ने? सिंपल. अच्छा, इफ ईमेल का मतलब क्या है? इफ ईमेल एग्जिस्ट, इफ ईमेल इज नॉट नल, बेसिकली नॉट नल. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन स्किप दिस. आप डायरेक्टली ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा. इफ ईमेल नॉट इक्वल टू एम्प्टी, नो एरर, नथिंग विल हैपन, दिस इज ऑल्सो फाइन. ओके, एवरीथिंग इज फाइन. बट सी, अभी मुझे ना 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है ये सब करते करते, इसलिए बाय डिफॉल्ट मेरे से डबल चेक होता है कोड. सो दिस ईमेल एंड का मतलब क्या है? अगर ईमेल एग्जिस्ट करता है एंड ईमेल नल यानी एम्प्टी नहीं होता है तो अंदर जाओ. बेसिकली दिस इज मोर सेफ. कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है, ये मोर सेफ है. समझ में आया? सो कॉमन सेंस ऑब्वियसली. आई एम गोइंग टू गिव यू दिस कोड. पासवर्ड के लिए कोड कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा या आप लोग लिखोगे? जरा बताओ मुझे. Who will write the code to do the same thing with password? You will do it. Yes or no, guys? Understood or not? यार आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो. मुझे लगता है एडमिन टीम से बात करना पड़ेगा. यस नो फटाफट बोलते जाओ यार, ऐसे मत करो. ये वर्चुअल सेशन है ना, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को समझा कि नहीं? Okay, this CSS does not have anything, so forget about it. Okay, so I'm going to upload this JS. Okay, the code is there in the JS folder. You will see form fields. Please do it. पासवर्ड भी चाहिए मुझे enabled.
ओके, गिटहब लिंक भेजू क्या? ओके, I thought you guys had the link, that's why I didn't share. JS. Okay, Mr. Sairam, here it is. Shared it in the chat, okay?
Okay, so Sairam, the button also you should make disabled. So the submit button should be disabled if either the username or the password is empty. If both of them are right, only then you should enable the submit button.
Sai, did you try doing it? It is one more if else, that's all.
Okay, let me check. No need to do it like this, Sairam. The button should get enabled and disabled from each of the on input methods. No worries, I'll show tomorrow. So continuously, whenever your text box is changing the data, that is when the button should get enabled and disabled, isn't it? So from the on input function of your user ID, I mean email, user email text box. From there, you should check both the things: document get element by ID for email, also password, also what your code you have written, right? It would be written from that on input. Both on inputs, you have to call the same code. Otherwise, I'll show it tomorrow. See ya, guys. See you tomorrow. Bye.